Hello everyone, welcome back to bfsc Fisheries online class. In taxonomy of shellfish, we studied the phylum Arthropoda and the mollusca. There were two phylum in shellfish. It is classified into two types, and the arthropods we will be studying here about the classification. So let's begin with the topic arthropods. Arthropods are actually the largest number of species are formed, so they are large in number. Arthros here is mean by joint and podos means foot. They have jointed appendages and the body are covered with the hard exoskeleton mainly made up of chitin, or it is a protein like structure, and the body is segmented. The bilateral segment is found in it, and for molting is shedding of the skin. It is also known as ecdysis. Epidermal cell actually divide mitotically and the space are created between the epidermis and the cuticle. This is actually insect removes itself from old cuticle or epicuticle or exocuticle. So this was what is the arthropod characteristics, the special form characteristic which is found, and the body is divided into head, thorax and abdomen. Here classification is shown in centipede and the crayfish, where body is divided into head, thorax or cephalothorax or abdomen. So this was the general characteristics, and let's begin with the main part, that is classification. तो आर्थ्रोपोड मेनली क्या होता है कि उसका एक फाइलम है शेलफिश के अंदर. मोलस्का और आर्थ्रोपोड दो क्लास फाइलम थे. आर्थ्रोपोड क्या बॉडी कवरिंग एक्सोस्केलेटन का बना होता है, जिसमें मेनली उसको जितने भी इंटरनल पार्ट होते हैं उसको वो सेव करने के लिए एक्सोस्केलेटन होता है. इसके बारे में अगर हम लोग देखें तो फिर इसका मॉल्टिंग प्रोसेस जनरल कैरेक्टरिस्टिक है. मॉल्टिंग या एक्डाइसिस का मतलब होता है कि बॉडी कवरिंग जो भी उसके है उसको शेड करना. एक टाइम इंटरवल पे ये होता है, या रिप्रोडक्शन के समय भी हो सकता है, और ये मेनली ग्रोथ को दर्शाता है कि वो बॉडी उसका ग्रोथ कर रहा है. एक्डाइसिस प्रोसेस. इस तरह हम लोग देखें कि इसमें क्या क्या जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स थे. क्लासिफिकेशंस में आते हैं. आर्थ्रोपोड a phylum are generally classified into three subphylum, that is Trilobita, Chelicerata and Mandibulata. Trilobita and Chelicerata are mainly terrestrial form. Trilobita are like they are many old, like they are not recent form. They are from dinosaurs age, we can say that. And the Mandibulata are further divided into three classes, that is Insecta, Myriapoda and the crustaceans. So it is the classification for arthropods. So we will be studying here about the Trilobita. The Trilobita are the extinct marine animal. They are three lobes, so they are named Trilobita, and the body is segmented, three segment form. सो ट्राइलोबीटा वो ऑर्गेनिज्म है जो कि डायनासोर्स के समय से पाए जाते हैं. ये एक्सटिंक्ट हो चुके हैं और इसका बॉडी थ्री लोब का है, इसलिए इसको नाम ट्राइलोबीटा हुआ. तो फिर इसके बाद दूसरा जो होता है वो होता है चेलीसेरेटा. ये ट्राइलोबीटा का एक डायग्राम है जनरल. चेलीसेरेटा आर ऑफ क्लास आर्किनीडा and they includes the spider, the scorpius, the tykes and the mites, and they are also the terrestrial form. So it is about Trilobita and Chelicerata. Now we will be continuing about Mandibulata. Mandibulata includes the crustaceans, the insects and the myriapoda, and means they are classified into three classes, and the jaw limbs are made of mandibles. Mandibles are for feeding organ found in the Mandibulata, so they are named Mandibulata. So what happens, मैंडिबुलेटा को हम लोग थ्री क्लास में फर्दर डिवाइड करते हैं. वो है क्रस्टेशियंस, इंसेक्ट एंड मायरिपोडा. उसमें जॉ लिम्स जो होते हैं वो मैंडिबल्स के बने होते हैं, इसलिए हम लोग एक फीडिंग ऑर्गन है जो कि मैंडिबुलेटा को उसका नेम देता है मैंडिबल्स. तो इस तरह हम लोग देखें, इसको हम लोग एक इमेज दिखाया गया है. ये हेक्सोपोडा क्रस्टेशियंस का
डिप्लोपोडा और क्वाइलोपोडा, इतना हम लोग को नहीं पढ़ना है, क्वाइलोपोडा और डिप्लोपोडा। तो इसका जनरल क्लासिफिकेशन जो हम लोग को जानना है वो है क्रस्टेशियंस, इंसेक्ट एंड मायरीपोडा. So we will be further studying about the general characteristics. Arthropoda divided into the mandibulata are further divided into crustacea, myripoda, and the insects and arthropoda are also classified into chelicerata and trilobites. These are the general diagrams of the classification shown. So we will be studying, main purpose of studying here is arthropoda. What is arthropoda? Digestive system. तो डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में हम लोग देखें तो उसका बॉडी मेनली कवर होता है एक्सोस्केलेटन से. हम लोग ये जानते हैं द बॉडी इज़ मेनली कवर्ड बाय exoskeleton and the digestive system is divided into three parts, that is foregut, midgut and the hindgut. The foregut is called stomatium or stomach occurs present in it, and the midgut is mesenteron, the small intestine comes over it, and the hindgut is protoderm or large intestine comes under it. So foregut are mainly for partial digestion, means complete digestion occurs in the midgut, and in the hindgut like whatever is left for digestion, it usually occurs in hindgut. So this is a general classification how it is divided. And due to the presence of exoskeleton, that is chitin is present, so stomatium and protoderm has living chitin along them, but due to presence of chitin, mesenteron has to do absorption. We know that in mesenteron absorption mainly occur in small intestine, so the chitin layer is not present in the mesenteron, and it is present in the protoderm, which helps in them to conserve the water in large intestine. So body यहाँ पे mainly three parts में divide है, foregut, midgut और hindgut. foregut को हम लोग स्टोमेडियम कहते हैं, midgut को हम लोग mesenteron कहते हैं, और जो hindgut होता है उसको हम लोग protoderm भी कहते हैं, प्रोटोडर्म. तो फोरगट में डाइजेशन पार्शियल होता है, मिड गट में कंप्लीट डाइजेशन होता है, इसलिए काइटिन का लेयर मिड गट में नहीं प्रेजेंट होता, पर जबकि हिंड गट में ये प्रेजेंट होता है, जो कि वाटर एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है. तो ये तो हुई बात डाइजेशन की. अब हम लोग देखते हैं कि इसका रेस्पिरेशन क्या है. तो रेस्पिरेशन के लिए गिल होते हैं या फिर और भी ऑर्गन है जैसे ट्रैकियल, बुक, लंग्स, ये सारे प्रेजेंट होते हैं. गिल मेनली आउटग्रोथ होता है स्किन का, जो कि कवर्ड होता है एक्सोस्केलेटन से, जिसमें काइटिन होते हैं प्रेजेंट. गिल्स पाए जाते हैं आर्थ्रोपोड जैसे स्कॉर्पियंस, ये सारे में, और जो ट्रैकिया है ये सब इंसेक्ट्स में पाए जाते हैं. बुक लंग्स मेनली पाए जाते हैं स्पाइडर्स में. तो ये हुआ रेस्पिरेटरी सिस्टम. रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए जो गिल्स प्रेजेंट है वो गिल्स मेनली जैसे ये जो टेरेस्ट्रियल आर्थ्रोपोड है उसमें ट्रैकिया और बुक लंग्स हैं, लेकिन जो एक्वेटिक आर्थ्रोपोड है उसमें जो गिल्स प्रेजेंट होते हैं वो मेनली जो वाटर में डिज़ोल्व ऑक्सीजन होता है उसको ट्रैप करते हैं और उसका हेल्प करते हैं ऑक्सीजन के लिए. तो ये हुआ रेस्पिरेशन की बात. अब हम लोग देखते हैं सर्कुलेशन के लिए. सर्कुलेटरी सिस्टम मेनली ओपन होता है. ब्लड ब्लू कलर का है क्योंकि उसमें कॉपर बेस्ड होता है एज कम्पेयर टू ह्यूमन बींग्स विच इज़ हैविंग ब्लड रेड कलर, एंड द मसल्स आर मेनली रिपल्स, दे डू नॉट कॉन्ट्रैक्ट लाइक ह्यूमन बींग्स, एंड दे हैव हेमोलिम्फ प्रेजेंट. हेमोलिम्फ इज a hemocoel like structure present in it, that is body organ are filled in due to open circulatory system. Blood flows through hemocoel, and the blood clots when it is in contact with the atmosphere. Blood color is brown in porphyria. तो ये हुआ सर्कुलेशन की बात. सर्कुलेशन में हेमोलिम्फ क्या है, और उसमें हार्ट होते हैं जो उसमें मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, वो रिपेल करते हैं. ब्लड का कलर कॉपर के कारण ब्लू कलर का होता है और ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाए जाते हैं. और इसमें ऑस्टिया प्रेजेंट होते हैं. ऑस्टिया मेनली ये एक जो कि हार्ट होता है वो क्लोज नहीं है, तो इसमें बहुत सारे एपरेचर्स पाए जाते हैं, उसको हम लोग कहते हैं ऑस्टिया. तो ये हुआ सर्कुलेशन की बात. एक्सक्रीशन के लिए हम लोग देखते हैं कि क्रस्टेशियन और आर्कनीड्स में पेयर्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम है, जैसे मैक्सिलरी, एंटिनल ग्लैंड या ग्रीन ग्लैंड हम लोग कहते हैं, कॉक्सल ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं.
मैल्फिगियन ट्यूब्यूल्स भी पाए जाते हैं इंसेक्ट सब में, और एपिक्यूटिकल लेयर मेनली वो प्रेजेंट होता है क्योंकि जो इंसेक्ट्स होते हैं या बहुत सारे ऑर्थ्रोपोड ऐसे होते हैं जिसमें एक्सक्रीशन मेनली इवेपोरेशन से हो जाता है, मतलब उसके बॉडी के कवर ना होने के कारण, मतलब उसके बॉडी से इवेपोरेशन होता है वाटर का, तो उसमें सारे वाटर उसके बॉडी से निकल जाते हैं, इसलिए एपिक्यूटिकल पाया जाता है उसके अंदर, सो दैट उसमें वो इवेपोरेशन ज़्यादा ना हो। सो एट तो excretory system, crustacean and arachnids have paired excretory system like maxillary antennal green gland, and they have malpighian tubule in some, like cockroaches. We can say some insect we have malpighian tubule, and epicuticle are layer found in many of the species, such as insect, to stop the evaporation or reduce the evaporation so that the body can have water in it. Because of evaporation they lose much of the water, so it is shown the excretory system, the green gland in Macrobacterium rosenbergi or any of the Macrobacterium species, and the Periplaneta have malpighian tubule like cockroaches, and the Palaneus malpighian tubules are present. So these are the structures. So in circulatory system we can say that they have open circulatory system, the heart are not closed, and the excretion we have seen, and the nervous system are having the ventral nerve cord they have present, and the reproductive system we can say that they are hermaphrodite or they are dioecious in nature, or they have direct or indirect development occurs. Metamorphosis can be complete or incomplete. For complete metamorphosis they have indirect development, or incomplete metamorphosis have direct development. So this was all about the Arthropoda. Further classification we will be seeing next in our next class. So thanks for watching, and if you like then please subscribe and like.